सो जीडी कैसे चलेगी आपकी? फर्स्ट यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन। आप में से कोई भी एक पर्सन रहेगा जो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेगा। इंट्रोडक्शन कैसे रहेगा? लाइक, हाय, माय नेम इज दिस, today we are going to discuss on this topic. If you feel the topic is relevant, you can tell that I feel that today's topic is very relevant or interesting, and then you have to give brief about the topic, like brief as in 1 or 2 lines, जिसमें आप उस टॉपिक का मतलब समझा सको अपने टीममेट्स को कि आप किस चीज के बारे में आज बात करना चाहते हो, क्या टॉपिक है। एंड समटाइम्स कई बार क्या होता है कि कोई टॉपिक होता है ना, वो ओपन एंडेड टॉपिक होता है, ठीक है, बहुत सारी डायमेंशंस हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही उस टॉपिक को एक डायरेक्शन दे सकते हो कि ये टॉपिक है और आज हम इस टॉपिक पे इस बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आप सभी लोग जो रहेंगे वो आप पार्टिसिपेट करेंगे, जिसको जो अपने पॉइंट्स देने हैं वो पॉइंट्स देगा। ध्यान रखना, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आप हिंदी और इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, और यू कैन यूज अ मिक्स ऑफ बोथ, ठीक है। बट ध्यान रखना कि आप जो भी बोल रहे हो दैट शुड बी रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए है, और बहुत साइज पॉइंट बोलने हैं, टू द पॉइंट, क्रिस्प पॉइंट होने चाहिए। ट्राई करो कि एक हेडिंग के साथ उन पॉइंट्स को स्टार्ट करो, फिर थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ उन पॉइंट को आप एक्सप्लेन करो, बट बहुत ज्यादा लंबा पॉइंट नहीं बोलना है हमें। एक दूसरे को कट नहीं करना है डिस्कशन में, ठीक है। जब भी आप अपना पॉइंट दे रहा है कोई पर्सन, तो उसको उस पर कट नहीं करना है, वेट करो उसका पॉइंट खत्म हो जाए, एंड इफ यू थिंक कि आपका पॉइंट उसके साथ लिंक करता है या आपके पास कोई रेलिवेंट एग्जाम्पल है, तो ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, वहां पर आप अपनी चीज बोलोगे, ठीक है। बट आप किसी पर्सन को कट नहीं करोगे, उनको मौका दो सभी को बोलने के लिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट में कंक्लूड करना है किसी एक पर्सन को। कंक्लूजन हमेशा जेनरिक रहेगा, आप किसी भी एक फेवर में बात नहीं करोगे, और सिर्फ आप अपने पॉइंट्स नहीं बोलोगे कंक्लूजन में। ध्यान रखना कि जो भी आपको अटेंटिवली होकर सुनना है, जो दूसरों के पॉइंट्स है ना, जो आपको लगता है कि हाँ इसने ये पॉइंट बहुत अच्छा या उसने बहुत अच्छा पॉइंट बोला था, वो आप अपने कंक्लूजन में दोगे, क्योंकि उससे आपका टॉपिक को स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। इसमें कहीं पर किसी को कोई डाउट हो? रविकांत, आपको समझ में आया? आई थिंक वो भी है भी नहीं इधर। ठीक है, ठीक है, ओके। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज प्रेजेंट यूथ कॉन्फिडेंट और कंफ्यूज, ठीक है। ये आज का टॉपिक है, आपको इसके ऊपर आज डिस्कस करना है। आनंद, आई थिंक आपका इंटरनेट कनेक्शन है, बिकॉज समटाइम्स यू आर हेयर एंड समटाइम्स नॉट। आयुष, अपना वीडियो स्विच ऑन करो। Actually, ma'am, I am not well. That's why, like, weakness is there. So, if possible, I'll try to speak Yeah, if on possible, laying please try to on switch bed. on your video. Yeah, okay, Yes. ठीक है। Hello, ma'am. Am I audible? Yeah, Anand, you are audible. Please note down your points. This is very relevant topic, और ये एक्चुअल टॉपिक है जो कि IOCL एग्जाम्स में पहले आ चुका है, ठीक है। So it's 2:56. I'm giving you 3 minutes time. On 2:59, we are going to start. Yeah. Can you please topic name, repeat, sir? please? प्रेजेंट यूथ कॉन्फिडेंट और कंफ्यूज। अब ये ओपन एंडेड टॉपिक है, अब आपको देखना है कि आपको इसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है। ओके, स्टार्ट।
Okay, so it's 2:59. Okay, so guys, who is going to start first? Who is going with the introduction? Okay, ma'am, I start. Okay, you will start. So who will conclude? Ma'am, I will try Wait, to will you conclude. conclude? Okay, Ayush will try to conclude. Okay, so we are starting with Rahul and Ayush will conclude. Okay, so guys, make sure that it is a like discussion. It is not a debate. You don't have to stick to one point only. कि ठीक है भाई मैं तो इस positive side हूँ तो मैं positive side ही बोलूंगा. Because of course youth है तो confident और confused दोनों चीजें हो सकती हैं. ठीक है? वो अब आपके ऊपर है आप उनको कैसे points को बोल रहे हो. ठीक है? हमें डिबेट नहीं करना है हमें डिस्कस करना है आप दोनों के फेवर में भी हो सकते हो एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर डोंट ट्राई टू कट मल्टीपल टाइम्स अनदर पर्सन ठीक है so it's 3 now we are going to start you can start Rahul. Good afternoon to all. My name is Rahul Rajanan and I am glad to start the discussion. The topic given to us for the today's group discussion is youth confident or confused. I think this is a quite relevant topic and I believe that today's the most of the youth are little bit confused due to the employment factor because they are not still getting jobs. Rather they educate on the higher level but still did not finding any employable jobs. Now I invite all of us to participate in the discussion. Yeah, definitely I agree with your point, Rahul. Yeah, the youth nowadays are really confused because of overwhelming courses they have. Like earlier, there was not that much social awareness of different courses that were there, but nowadays, from the childhood only, we can see that courses, everything is there. So because of these overwhelming choices and all, so many choices, they are really confused. So I would like to start the discussion into that topic. Yes, so today's youth are mostly confused because they are not focusing on a single goal. They try to manage 2-3 things at a time. Like they also spend their time on social media, and they are also at the same time preparing for exam. And they don't know even what kind of exam they are preparing. Like when they go to examination hall and they see which kind of questions are coming, then they know, oh, this exam was not in my zone. So most of the youth are today confused. Yeah, I know that तुम ये बोलना चाह रहे हो कि वो पता नहीं चलता है, but it's not like they don't even know the exam. They know the exam, but the thing is that कि उनको जैसे ही दिखता है क्योंकि ये एग्जाम का भी फॉर्म आ चुका है तो वो उनको भी फिल कर देता है कि चलो जाके देखा जाएगा कैसा रहता है, क्योंकि उनको इतना इंफॉर्मेशन है सामने. या फिर जाते हैं तो पता Most चलता of है कि दिस वाज नॉट, या बट सिलेबस ये सब पता हो जाता है. I get that point. And also, like am I audible now? बहुत सारे Yeah, youth yeah, आजकल Anand, you are मोटिवेशनल audible. स्पीकर के अंदर आ जाते हैं और मोटिवेट होके. Yeah, definitely, Yes. definitely. Yeah, there is social media influence on the students. Yeah, that's correct. I agree with all of you. I want to add my point. Like present youth are confident when he gets proper guidelines from his childhood, and confused when he did not get proper guideline from his childhood, and they may get in different sector, try to get in different sector where he got the opportunity. So proper guidelines is necessary for present youth. Yes. So the youth which are confident knows what he is doing. Like he knows what he have done and what he will done next. So that kind of vision, if a youth have, then that youth is confident. Otherwise, he will be confused. Yeah, definitely, I agree with your points that
आज के टाइम में वो पेरेंट्स का गाइडेंस बहुत जरूरी है, बिकॉज जितने ऑप्शंस है अगर गाइडेंस उनको ना मिले तो बिल्कुल भटक सकते हैं. डेफिनेटली एग्री. And yes, and like all of us have discussed here, I think there was some kind of technical problem. That's it. Sorry for the late coming. Yeah, And so most of us have already talked about the today's youth and their problems also. So I would like to add some more points to that point. Like now we are comparing the youth. Like we are asking that question, right? Are they confident or are they confused? So to whom we are comparing this youth? Is it with the present? Is it with the past generation or as a whole? So as we all know that the present youth has got a lot of advantages also. Like they are exposed to better education, one thing, and they are exposed to in the better global scenarios also. They are exposed. Like in this area of globalization, there has been a lot of cultural exchanges that's happening among the both. So our youth is kind of exposed to all these things, and our thinking has also been evolved. So maybe the past generation may not be able to accept all those thinkings, or all those kind of our own thinkings may differ from the past generation. And as rightly pointed out by my friends, the today's youth has kind of over dependent on the social media also. But the same dependency on social एक्चुअली अभी का यूथ क्या करता है, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस में आके वो डिसाइड नहीं कर पाता है उन्हें स्पोर्ट्स में जाना है या बिजनेस करना है या पढ़ाई करना है, तो वो उनके कंफ्यूजन का बहुत बड़ा कारण है. Yes. तो I agree with you, guys, and I want agree to with your add some point statement that like our youth is unable to decide what is good career for them. They are unable to decide actually. But apart from mass chunk, a few youth are also creating jobs through various startups, creating new ventures and having a employable for many other peoples too. Yeah, yes, I Rahul, I completely agree with you, but I want to add my point. Like nowadays, we all know that NEP 2020, like NEP 2020 focusing on from childhood talent skills development. So this is good thing for youth confidence, for confident youth, and the and when NEP 2020 by NEP 2020. There is more chances no youth is confused in future. So this is good for this is good for our youth. NEP 2020 new education policy. new education policy. Yeah, mental it's health is good. also But I would one like to of add a the point problem of our to youth. the Rahul's point that yeah, Yes. there is information overload. There is information overload that there are so many things on social media and all. But it depends कि student अब चाह क्या रहे हैं. अब जैसे राहुल ने बोला स्टार्टअप ये सब के बारे में, तो yeah, because of the social media now, doing a startup is really easier than it was earlier before. So yes, वो एक इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का है. फिर से डिफरेंट स्पोर्ट्स जैसे कि देखने को मिलता है, स्पोर्ट्स करियर दिखता है. आयुष ने जैसे बोला कि मोटिवेशनल स्पीकर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है. एक अभी जस्ट कुछ दिन पहले कुछ रील्स में देखने को आया कि स्पोर्ट्स का ज्यादा promotion हो गया, तो the youth, like if someone is in 7 or 8 class, he is thinking that okay, I should start my career in cricket or something like that. Then after 1 year he sees that in social media that yes, now clearing a UPSC is much better, so then he changes his platform. So that shows that yes, the youth is confused nowadays. So to overcome this, what I think should be best is that parental guidance it's very very important, and what their friends does, ये दोस्तों का जो सर्कल है वो भी बहुत बहुत मायने रखता है इन सब केसेस में. Yes, I agree mental with your health statement. Yes, I want to add one more point. They Mental health is also one of the reason of youth to be confused, because many type of burden he took from the society, and then they don't know how to handle that, and then he got confused. So this is also one of the problem, one of the reason why they are confused. Yes, I also want to add some more point why the youth of India has mostly become confused, because they don't pursue their career as per their interest. As per the many surveys,
many survey indicate that most of the BTech students are actually not employable because they're not pursue as per their interest in their career. Yes, 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 Rahul, I definitely. agree with That's you. a Like very good point, employment is Rahul. the one point of youth are confusing, and That I is the want to add confusion, one no? point. He don't Like know which branch he comparison has to select. Yeah. I want to add one like comparison with others. Why social? When we saw the social media, this is the one point of when our youth is confused because they doing compare with others. Yeah. Yes, I and would like adding to to add a point Aruna's point, what I would like to say Rahul one more thing. said. What Rahul Like said कि Aruna सभी was लोग talking about the स्टार्टिंग में पहले ऐसे देखने को मिलता था कि इंजीनियरिंग ही सब कोई ले लेते थे, उसके बाद सोचते थे कि करने को क्या है. So nowadays I guess that is changing, right? Because earlier there was no social media or nothing like that. What they used to do is, okay, parents are saying that okay, you need to do engineering, so everyone at the very beginning they used to take engineering, and then after going to college they see that okay, this is my interest and that. So that was seen like 2-3 years before that. Everyone was first he was an engineer, and after that he pursued what his goal was. So nowadays, because of technology and social media awareness, we can see that we can also see that yes, engineering students are decreasing day by day. See, from our exam, that GATE exam also we can see now that the number of students that had appeared in GATE exam that had reduced. I guess this is because of the awareness, and student sees that okay, there are I many want to different add one more point. platform Like also, so they can uh, go there. Yeah, yes. I want to add one more point, like the financial condition of the family pressure, unemployment is also one of the reason why our youth are confused. Because if you are supported by finance, then you can be a confident guy. Otherwise, you will be in doubt whether I can do that. I don't have any financial support. So this is also one of the reason to why youth are confused. Yes, I I agree with completely you, I would agree like with to your Rahul, add but point. one more That's point. what engineering is Aruna said. That Finance education also, because of NEP, I right? guess this thing will be okay. Okay, Anand. Yes, I Okay. also want to add some Yeah, more Anand, points. we can hear you. Okay. Okay, I think am I audible now? Yes, Yeah, yes, yeah. you're audible. Just like Ayusha talked about the youth being confused also, but I would like to add a different viewpoint regarding the financial education. Compared to the past generation, the present youth is more confident in selecting their own career also. And in addition to that, the financial education, I am stressing on that point. The financial education of the present youth is more. As we can see that the elder generation used to depend more on the fixed deposits and other things for their savings, just like it, but the today's generation is more confident on investing in stock markets and bitcoins, and they are able to study the market variations also. I think the financial education has greatly improved. And also earlier one point was discussed about the social media influence. I can cite one example where the social media was used by the youth. In 2018 the flood happened in Kerala. At that time the social media was used as an excellent tool by the youth of Kerala to provide all the relief activities. It was being used to locate the isolated persons and provide all the food and the medicines to the affected persons. So that is also, I can add that the social media was used as an effective tool also. So I am pretty much confident in these areas. Like the youth is confident in the financial education and also in the social media. There are also Yes, other points also where the youth is confused also. That also should be discussed. yes, I agree I with your agree with statement that the participation of the youth in the financial sector is increasing day by day. Before the COVID, there is not enough participation in the stock market or Bitcoin in any financial institution. But after that, participation is increasing drastically. Due to the also it may be due to the technology which are easier for any trading purposes like any computer. The new technologies and opportunities given them new strength to the youth. And also today's era of globalization also. Today's youth is exposed to all the ideas that is happening all around the world. This is kind of a privilege that the today's youth is having compared to the older generation. I am just taking as a comparison also. If we should say that the present youth is confident or confused, that's a discussion. Means I am just comparing with the
the entire society, including all the other age strata of people also. So as we can always say that there has been a lot of cultural exchanges that is happening, both in the conventional way and in the unconventional way also. And so even the media, the advertisements, everything is influencing the today's youth also. So sometimes the youth gets confused also. They are sometimes they are not sure of what they should do in future. Sometimes they are not confident about what will happen to them in the future. That we have seen in the COVID time also. Most of us, most of the youth were trying to go for a government job because of many of the youth got affected, got fired from their job due to COVID also. This happened in the private sector. At that time, I have seen and personally seen some of my friends also getting mentally frustrated, and they want to try for the government job also. But the government cannot provide jobs for everyone. So, but at that time I have seen a lot of people getting confused about what career they should choose, how they should pursue their dreams. But slowly I am seeing a positive change also. Now it is not like you have to go in a single dimension. There are a lot of multi-dimensional. Also, I want to add one more point. Like in rural areas, the lack of education is also one of the reasons why youth are underconfident or confused. I also want to add some more points. Initially, most of the students are confident at the start of his career, but as the time passes, it becomes underconfident due to several reasons, less marks in competitive exam or various other things. But at this point, the role of parents, friends, and families are very important to motivate to grow in as a career. So, role of parents is also important there. And one more serious issue I think we should discuss is about the brain drain. Like lot of educated and highly qualified youth are migrating to the other developed countries also. So I have talked with many of them, and they are of the opinion that they are getting a lack of opportunities in our country. So that should not be the case also. Our government also should be formulating some kind of well-revised plans, and they should implement them so that we can sustain the highly qualified youth professionals also in our country also. And not only about the highly qualified, even the general public also should come forward and promote these kind of activities. Not only the government, the general public also should. Okay, Ayush, please conclude. Okay, now, so thank you guys. It was a good discussion about that today. So the reason was like competitive exams, unemployment, social media influence, financial problem, mental health, lack of resources. So these are the reasons which led our present generation youth are confused. Also, there are youths which are confident, like who knows how to use resources in proper way, who know what is their strength, who have vision. So it was a good discussion. Thank you, guys. Okay, great. So, fine. Today's topic was present youth, confident or confused. ठीक है? राहुल, आपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया. Your introduction was good. ठीक है? आई थिंक मैंने पहले भी आपको फीडबैक दिया है that you are improving day by day a lot. जो मैं देख पा रही हूँ आपके जो भी आपका प्रोग्रेस मैं देख पा रही हूँ जितना आप मेरे साथ अटेंड करते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने तभी आपको बोला था कि जब आप इंट्रोडक्शन देते हो यू हैव टू गिव द ब्रीफ ऑफ द टॉपिक. एक ओपन एंडेड टॉपिक, आप उसको डायमेंशन दे दो कि आपको क्या डिस्कस करना है, क्या क्या नहीं डिस्कस करना है. राइट, आपका इंट्रोडक्शन ठीक था जो आपने स्टार्ट किया, बट आप उसको और कैसे बोल सकते थे कि टुडेज टॉपिक इज प्रेजेंट यूथ कॉन्फिडेंट और कंफ्यूज. सो लेट्स डिस्कस फ्रेंड ऑन द टू एस्पेक्ट कि आज का यूथ कंफ्यूज है तो क्यों है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और अगर वो कॉन्फिडेंट है तो क्यों है, क्या रीजन है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं. ठीक है, तो आपने क्या करना था, इसमें एक गाइडलाइन दे देनी थी अपने सारे टीममेट्स को कि हम आज इन चीजों पे बात करने वाले हैं. तो वो जो टॉपिक था वो और सॉर्ट हो जाता सारे टीम मेंबर्स के लिए. ठीक है, आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते थे. उसके बाद आपने जो पॉइंट्स दिए हैं दे वर लाइक गुड. ठीक है, सबसे पहले आपने स्टार्ट किया यूज ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, आपने ऐसा कहा था कि एम्प्लॉयमेंट, आपने लाइन स्टार्ट की थी
कि एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है आज का यूथ कंफ्यूज है, आप उसको एक हेडिंग देके दैट टुडेज यूथ इज अनएम्प्लॉयड एंड दिस इज व्हाई इट इज कंफ्यूज, और आप उसके साथ एक एग्जाम्पल या एक चीज एक अटैच कर सकते थे जिससे कि आपका वो पॉइंट एक निकल के आ जाता, ठीक है। फिर आपने सेकेंड पॉइंट में ये बोला अनेबल टू डिसाइड करियर। जब आप एक बार एम्प्लॉयमेंट वाला बोल रहे हो, ठीक है, तो फिर वो टॉपिक जो उसमें कवर हो सकता था, ठीक है। अनेबल टू डिसाइड करियर, इसका भी कंफ्यूजन लास्ट में सेम ही निकल रहा था, ठीक है। फिर आपने बोला नॉट गोइंग एज पर देयर इंटरेस्ट, unable to decide career or not going to as per their interest, it is a kind of same thing, got it। ये एक ही चीज हुई ना जो आप बोल रहे हो, दो अलग अलग तरीकों से बोल रहे हो आप उसको, बट कंक्लूजन इसका एक ही निकल के आ रहा था, ठीक है। अंडर कॉन्फिडेंट ड्यू टू लो मार्क्स, ये आपका एक लास्ट पॉइंट था, और इसमें आपने सोल्यूशन भी दिया कि जो पेरेंट्स है उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट वाज गुड, ठीक है। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं नवीन पे। नवीन, आपने सबसे पहले स्टार्ट किया सोशल अवेयरनेस और चॉइसेस जो है उसकी वजह से यूथ कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट ठीक था आपका। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस आपने स्टार्ट किया। अभी क्या हो रहा था यहाँ पे, नवीन ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस स्टार्ट किया, उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद आयुष ने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बोला, आनंद ने भी थोड़े टाइम बाद सोशल मीडिया का पॉइंट बोला। एक ही पॉइंट अलग अलग पर्सन बोल रहे हैं, रेपिटेटिव हो रहा है वो पॉइंट, या तो आप अटेंटिव नहीं थे, दूसरे पर्सन को आप सुन नहीं रहे हो कि वो क्या बोल रहा है, और अगर आप सुन रहे हो तो और आपके पास भी सेम चीज पे पॉइंट था तो आपको सेम टाइम पे देना चाहिए था ना, उस पॉइंट को एक ही बार में कंप्लीट आप लोग करते, रादर देन कि मैंने भी स्टार्ट किया फिर थोड़े टाइम बाद उसने स्टार्ट किया, फिर दो चार टॉपिक्स और डिस्कस करके फिर वापस से एक और पर्सन ने उस चीज को स्टार्ट किया, ठीक है। नवीन का फिर से एक रेपिटेड पॉइंट आया था, पेरेंट्स गाइडेंस। पेरेंट्स की गाइडेंस नवीन पहले डिस्कस कर चुके थे एंड देन आपने उसको फिर से पॉइंट को रिपीट किया, पेरेंट्स गाइडेंस। अवेयरनेस, अवेयरनेस भी आप पहले बोल चुके हो, उसके बाद आप फिर पॉइंट को रिपीट कर रहे हो, और जो आपका पेरेंट्स गाइडेंस वाला पॉइंट था दैट वाज टू लॉन्ग, रिपीटेटिव पॉइंट हो गया और उसके ऊपर से वो बहुत लंबा पॉइंट भी हो गया था, आप उसको क्रिस्प रख सकते थे, छोटा कर सकते थे उसको, ठीक है। अवेयरनेस वाला पॉइंट भी आपने रिपीट कर दिया। उसके बाद आपका एक पॉइंट अच्छा था नवीन, जो आपने बोला था कि जो सोशल मीडिया है वो स्टार्टअप्स में हेल्प कर रहा है, ये एक अच्छा पॉइंट था जो कि किसी और ने डिस्कस नहीं किया, बट यू वर एबल टू लाइक रेज दिस पॉइंट, ठीक है। ओके, आयुष की तरफ से था नोट फोकसिंग ऑन सिंगल गोल, की मतलब कंफ्यूज है, जो कि ठीक है, पहले से हम इस पे डिस्कस भी किया। अगेन आयुष ने भी सेम रिपीट किया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, वही हम सोशल मीडिया हम चीज का कंक्लूजन निकाल के सोशल मीडिया किया था कि जितना भी वो यूथ कंफ्यूज है दैट इज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। एक्चुअली और पॉइंट का मैंने निकल के यस मैम मोटिवेशनल स्पीकर वाला पॉइंट रखा था मैम, कि वो मोटिवेशनल स्पीकर के वो चंगुल में आके और उनका एग्जाम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग जोन टेक्निकल है और मैं उनके मोटिवेशनल स्पीकर के वो उसमें आके और यूपीएससी में प्रिपरेशन करने लग गया, सो दैट इज अंडर ना कि वो उनको वो कंफ्यूजन है, अनेबल टू चूज देयर करियर्स, यस मैम, नॉट क्लियर इन देयर इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो उसको आप उस तरीके से बोल सकते थे, ओके मैम। फाइनेंशियल एंड मैम एक डाउट था, इस टॉपिक में ज्यादातर डिस्कशन जितने सभी लोग किए वो इसी पे किए कि सोशल मीडिया के वजह से जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, तो एक्चुअली उसी टॉपिक पे सभी लोग तो बात किए। अगर उस पे अगर ऐसा जैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब एक ही टॉपिक पे बहुत देर तक बात होते रहा, बट वो सारा उसी टाइम बात हुआ ना मैम, तो और इसको क्या कर सकते हैं? वही I'll give you the answer कि और क्या क्या पॉइंट्स आप ऐड कर सकते थे, जो जो अच्छे पॉइंट्स आपने मिस किए। देखो प्रॉब्लम वो नहीं है कि पॉइंट्स सोशल मीडिया पर निकल के बात सारे कंक्लूड हो रहे हैं, इट्स फाइन कि सोशल मीडिया से प्रॉब्लम्स हैं। माय पॉइंट इज कि अगर एक बार सोशल मीडिया का पॉइंट स्टार्ट हुआ तो ट्राई टू मेक कि आपके माइंड में जो जो एग्जांपल्स थे, देखो पॉइंट एक था सोशल मीडिया, आप सबको सिर्फ एग्जांपल्स दे रहे थे कि सोशल मीडिया की वजह से वो इन्फ्लुएंस होते हैं, करियर चूज नहीं कर पाते हैं, सोशल मीडिया की वजह से वो प्रेशराइज हो जाते हैं, वो फिर वहां पर कॉन्फिडेंट नहीं है, सोशल मीडिया की वजह से उनका रूटीन नहीं है, इस वजह से वो कंफ्यूज है। तो आई एम जस्ट सेइंग कि जो एक पॉइंट था सोशल मीडिया, आप सब उसके जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहे थे, वो जब एक पर्सन ने स्टार्ट किया था वो आपको फिर तभी कंप्लीट कर लेना होता है, ठीक है। माय पॉइंट इज जस्ट दिस। और जब ये चीजें डिस्कस हो गई, आनंद ने तो बहुत टाइम बाद, जो बिल्कुल लास्ट में आई थिंक सेकंड थर्ड पॉइंट था, आनंद ने तो फिर सोशल मीडिया का पॉइंट बोला है, जबकि वो सोशल मीडिया ऑलरेडी 3-4 बार डिस्कस हो चुका था,
समझ रहे हो आप लोग? Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद आनंद, आपके पॉइंट्स मैंने आई थिंक आपके साथ मैंने पहले भी जीडी अटेंड किया है, आई थिंक मुझे ज्यादा याद है, मैंने आपको सेम ही फीडबैक दिया है दैट योर पॉइंट्स आर टू लॉन्ग, उनको प्लीज थोड़ा छोटा पॉइंट करो, क्योंकि अभी भी मैंने जो नोटिस किया था जब आप पॉइंट बोल रहे थे तो किसी ने आपको कट किया था बिकॉज यू वर टेकिंग अ लॉन्ग टाइम, आप पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे थे बहुत अच्छे से, बट ऑफ कोर्स जब वहां पर आप लोग 15-20 बच्चे जीडी में रहोगे तो नो वन इज गोइंग टू गिव यू दैट मच ऑफ टाइम। ओके, ठीक है, तो पॉइंट्स को अपने को थोड़ा शॉर्ट करो। बाकी मैंने जैसे आपको बताया कि एक दो पॉइंट्स आपके भी रेपिटेटिव थे, वो रेपिटेटिवनेस हमें नहीं रखनी है। ठीक है, अरुणा, अरुणा का पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट अरुणा मुझे क्लियर नहीं हुआ था, आपने बोला कि कॉन्फिडेंट फ्रॉम चाइल्ड और कंफ्यूज फ्रॉम चाइल्डहुड, आई थिंक आपने चाइल्डहुड से उसको कंफ्यूज और कॉन्फिडेंट दोनों बोला था। मैम कंफ्यूज लाइक कंफ्यूज प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, लाइक कंफ्यूज कब होगा और कॉन्फिडेंट कब होगा। जब प्रॉपर मतलब गाइडेंस अच्छा होगा तो वो कॉन्फिडेंस होगा, अगर गाइडलाइंस अच्छे नहीं होंगे तो ये चीज होगा। ठीक है, तो वो पॉइंट जो था ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज एज एन लाइक कोऑर्डिनेटर मुझे ही वो पॉइंट क्लियर समझ नहीं आया था। ठीक है, तो हमें अपने पॉइंट्स को हेडिंग देके, जैसे मैंने पहले बोला कि हेडिंग दो, देन उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो विद इन कंसाइज, कि बहुत छोटा पॉइंट करके उसको आप एक्सप्लेन करो। अब जैसे कि आपने बोला सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में आप सबसे पहले क्या करते हैं, हेडिंग बनाओ सोशल मीडिया हेल्प इमेज। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपका कंपैरिजन वाला पॉइंट आ जाएगा अरुणा। ठीक है, कि कंपेयर करते हैं एक दूसरे से एंड ऑल। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस आपका इसी पॉइंट के अंडर आ जाएगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस होता है। मेंटल हेल्थ बहुत हद तक आपका इसके अंडर आ जाएगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी तो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, कंपैरिजन से है, लो मार्क्स से है, सब कुछ है। ठीक है, इसके बाद आप किसी एक पर्सन ने पॉइंट बोला था, अनंत ने ही कहा था पॉइंट कि ग्लोबलाइजेशन वाला पॉइंट कहा था, उसको आप कैसे स्टार्ट कर सकते थे अनंत, ग्लोबल एक्सपोजर और अवेयरनेस, क्योंकि आज के यूथ को ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है, वो दूसरे कल्चर को एक्सपोज कर रहा है, उसके पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, तो इट गिव्स अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस टू देम। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला ही नहीं, कॉन्फिडेंट क्यों है, एम्ब्रेसिंग चेंज। आज का यूथ क्या है कि जो भी चेंजेस वो देख रहा है, कितना डाइवर्सिफिकेशन है आज की लाइफ में, वो उसको इम्प्रेस कर रहा है, वो उसको बहुत अच्छे से ले रहा है, और दैट इज मेकिंग हिम और हर कॉन्फिडेंट। ओके, ठीक है, करियर ऑप्शन जो हमने पहले बात की, आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट दिया था, करियर चॉइसेस हो गया है, टू मेनी ऑप्शन, तो ये भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये सब चीजें आपके एक पॉइंट के अंदर आ सकती हैं। ठीक है, कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, उनको अपने इंटरेस्ट क्लियर नहीं है, वो इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं किसी दूसरे से, और आजकल की जो NEP 2020 आपने बात की थी, उसका एक ड्रॉबैक भी हो सकता था कि आ गया है मार्केट में बट हमें उसका यूटिलाइजेशन पता नहीं है, तो इस वजह से भी वो अंडर कंफ्यूजन है। ठीक है, पर्सनल लाइफ में भी कंफ्यूज है, बहुत टेक्निकलिटी हो गई है, रिलेशनशिप सब पहले जैसे नहीं रहे हैं, दैट्स व्हाई यूथ इज कंफ्यूज। पहले क्या होता था कि अरेंज मैरिजेस होती थी 99%, ठीक है, पेरेंट्स ने सबको सेटल डाउन किया होता था, बट नाउ दे हैव नाउ ऑप्शंस, बहुत सारी चीजें हैं उनके पास, तो इन रिलेशनशिप्स दे आर आल्सो कंफ्यूज, दे आर नॉट इवन कॉन्फिडेंट कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आजकल का सोशल मीडिया लाइफ हो गया है, ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, अब उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि ये ट्रेंड जाना है या हमें मॉरली जाना है। ठीक है, और कंक्लूजन जो आपने किया था आयुष, वो कंक्लूजन में आप बहुत चीजें और ऐड कर सकते थे, आपने क्या किया, बस आपने कॉन्फिडेंट के और आपने कंफ्यूज के पॉइंट दे दिए, बट आप कैसे बोल सकते थे कि ठीक है, वी हैव अ हेल्दी डिस्कशन एंड सो आई थिंक दैट today's youth is confused and confident both, and I feel it is confused in a good way, क्योंकि कंफ्यूज होना भी अच्छी बात है बिकॉज दे हैव टू मेनी ऑप्शंस, और इस एज में इफ दे आर कंफ्यूज देन दे आर एक्सप्लोरिंग मोर ऑप्शंस, इट यस कैन बी मैम, डन लाइक दैट ना। यस मैम। ठीक है, उसके बाद एक ओलंपिक्स का हमारा स्पोर्ट्स का भी पॉइंट आया था कि कॉन्फिडेंट भी तो है ना, अभी हम कितना स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने हम टेक्निकल मैराथन्स में जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, यस मैम, तो पॉइंट्स को थोड़ा क्रिस्प करो, हेडिंग्स दो, उनके नीचे अपना पॉइंट बोलो, और ट्राई करो कि दूसरे पर्सन को मैक्सिमम सुनो, बहुत अटेंटिवली सुनो,
कि उसने कुछ एक चीज बोली, अरे इसका तो एग्जाम्पल मेरे पास है तो मैं बोलने वाला हूँ इसे एग्जाम्पल, ठीक है। रादर देन आप उस पॉइंट को 2 मिनट के बाद दोबारा से उठा के लेके आओ डिस्कशन में, उस पॉइंट को वहीं पर डिस्कस कर लो। इसके अलावा किसी को कोई और डाउट? नो? ठीक है गाइस, फिर कल मिलते हैं। कल आई थिंक जीडी का टाइम शाम को रहेगा 9 बजे। फाइन। अगर आपको कुछ भी जरूरत होती है, कुछ भी चीजें चाहिए होती है, यू कैन मैसेज अस इन ग्रुप एंड रेस्ट मेक श्योर कि आप नोटबुक मेंटेन करो, अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि टॉपिक्स आपके पास वापस आने वाले हैं। टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं, हर टॉपिक इंटरलिंक्ड आपको मिलने वाला है। मे भी कोई टॉपिक होगा कि जो बहुत डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको टॉपिक्स आने वाले इंटरलिंक्ड और आप कहीं के पॉइंट यूज कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप जो पार्टिसिपेट कर रहे हो अच्छे से करो, नोटबुक्स मेंटेन करो, और उन नोटबुक्स को गो थ्रू भी करना है, सिर्फ लिख के नहीं छोड़ देना है हमने, ठीक है। ओके गाइस, देन सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। बाय बाय।